कस्टमर ने हमारे पास एक A70s हैंडसेट ला के दिया है। अभी हैंडसेट ऑन हो रहा है। उसमें कस्टमर ने बोला है कि नेटवर्क की इशू है। हमने अभी सेटिंग पे चेक करेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। देखो इधर प्रॉब्लम बता रहा है। फिर हमने अबाउट पे जाएंगे। अबाउट पे जाके चेक करेंगे। ये देखो ऑन करके आ रहा है। फिर हमने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इधर देखो बेसमेंट पे चेक करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और बेसमेंट ऑन करके आ रहा है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी ट्राई किए हैं कि शॉर्ट आउट करने की। यहाँ दिक्कत क्या था बोला तो हमने इसकी SDR IC भी चेंज करके देखा। दो तीन उधर SDR की नीचे बोर्ड बैंड था। इसकी वजह से हमको CPU eMMC दूसरे बोर्ड पे स्विप करना पड़ा। देखेंगे नेक्स्ट हमने स्विप करके देख लेते हैं। देखो बोर्ड है, अभी स्विपिंग स्टार्ट है। वॉच करो वीडियो और लास्ट एंड को देखेंगे स्विप करके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है या ना होता है। ओके।
ये देखो हमारा स्वीपिंग कंप्लीट हो गया है, ये 70S बोर्ड का। ये देखिए बोर्ड तो अभी हमने उसको फिट करेंगे, डिस्प्ले पे लगा के चेक करेंगे हमने वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ना हुआ है। तब तक हमारा वीडियो जो पहले भी वीडियो देख चुके हो वो रिव्यू अच्छा है। अभी भी जो नया अपलोड होता है वीडियोस वो भी लाइक करिए, पूरा देखिए, और जिसमें से जो तुमको मिल जाता है सीखने के लिए वो भी इधर सीख सकता है। हमारा बैच भी स्टार्ट है नेक्स्ट 15 को, हमारा बैच में भी ज्वाइनिंग हो सकता है। अभी हमारा हैंडसेट तो ऑन हो गया, देखेंगे हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है ना हुआ है। ये देखिए हमारा पुराना बोर्ड है, दिखा रहा है ये पुराना बोर्ड हमारा। अभी ये देखिए चेक करेंगे हमारा प्रोसेस, उसमें फर्स्ट प्रोसेस ये देखिए थोड़ा स्लो ले रहा है ऑपरेटिंग। ये देखिए सेव होके चला गया हमारा फर्स्ट, और अबाउट पे चेक करेंगे। ये देखिए बेसमेंट अनोन था हमारा, क्लियर हो चुका है। ये देखिए बेसमेंट अनोन था, ये भी ओके हो गया। थैंक यू, हम जो काम किया है हो गया है काम सक्सेस है। कस्टमर भी सेटिस्फाइड है अभी कस्टमर को। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, देखते रहिए ऐसा ही हमारा वीडियो। देखिए पूरा क्लीन से वर्क हो रहा है। ओके।